idea. Need to zip up. As I'm fasting also, so. So that's Benog Wildlife Sanctuary और इसे माउंटेन क्वेल बिनॉग माउंटेन क्वेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। ये मसूरी में है और आज हम हाइक करने वाले हैं वहाँ पर। Hello everyone, how are you? I hope everyone is trying to fight the situation right now, and that's the spirit. The situation is very tough for us guys. We're making this vlog so you can feel better and positive. तो बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की सबसे ख़ास बात ये है कि ये साल के 12 महीने खुला रहता है हर टूरिस्ट के लिए, हर लोकल के लिए। और उससे भी अच्छी बात ये है इसकी कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। तो क्लाउड एंड से अप्रॉक्स 200 मीटर पहले ट्रैक शुरू होती है और लगभग 300-400 मीटर का ढलान का ट्रैक है। उसके बाद हमें ट्रैक शुरू करनी है चढ़ाई की। मैंने 5 से 6 बार ये ट्रैक कर दिया है अब तक और मैंने ये महसूस किया है कि बिगिनर्स के लिए ये ट्रैक सबसे अच्छा है मसूरी में। जो भी ट्रैकिंग के फील्ड में आ रहे हैं, शुरू ही कर रहे हैं ट्रैकिंग करना और जिन्हें इंटरेस्ट है इसमें, उनके लिए आसान ट्रैक है, मस्ट विजिट। And it snowed last night. मिड ऑफ अप्रैल और ठंड हो रही है। ड्रेस कोड कॉपी तुम लोग क्या कर रहे हो? All right, so we are near to Benog Wildlife Sanctuary Peak, and basically it also comes in Rajaji National Park. It's a part of Rajaji National Park. और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो रही है, तो अब हम चढ़ाई की तरफ चलेंगे। आइए। It's a place of bird watching और काफ़ी birds की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। A few birds on the tree, if you can see. Oh, so it's a small bird we found. Oh, बहुत छोटी है और एंड्स चींटियां खा रही हैं। It's a part of nature ना। उड़ते उड़ते मर गया होगा। दबा दूँ? It felt bad after watching this. बट बहुत खूबसूरत चिड़िया दिख रही है। I drove through there till there. And then down. And that is Cloud and Resort. From all the way we are coming down hike there, Yep. there, and this trail we are following, it's leading up. Okay, now the place is having a lot of birds, so one can try watching birds here
and I'm trying to see a magpie today. Let's see if I'm lucky. I'm tired now. Very tired. Yeah, you're fasting, no? Even I'm fasting. Walking and walking is very tough today. Yeah, Look at the views. and that is Doon Valley, Algar River. a wide Doon Valley. है ना? Algar River या Algar, yeah, that is Algar. अलगाड़ नहीं, अलगाड़ is river. It is a river. तो बेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1993 से यहाँ स्थापित है और 338 या शायद 339 हेक्टेयर में फैली हुई है। कहा जाता है कि, और वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है कि सबसे अच्छा मौसम इस जगह को देखने का समझ है अप्रैल। आज 22 है और क्योंकि उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ गई है तो आज बहुत ठंड हो रही है, मगर व्यू फिर भी अच्छा लग रहा है। इट्स गुड टू सी। I'm thirsty. Not. Fast also. ऊपर पहुँचते से काफ़ी ठंडा हो गया है और मे बी इट कैन रेन। मेरा फास्ट है और आई एम थर्स्टी। वेदर यू कैन सी अराउंड इट्स ऑल ग्रे। As reaching up here, I'm feeling delightful, and mountains here are so beautiful, cannot even express. And the best thing here I like is silent. It's far from the maddening crowd, and yeah, that is everyone need. Okay, I saw kind of flower, I don't know what it is called, and it's here, it's dried. Sure. यहाँ पे पेड़ काफी कम हो जाते हैं। जो है शाहिद इस रूट से गए हैं। They follow this path, but I'm following this trail. मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। We are about to reach. It's very cold, and yesterday night in the upper mountains, in the upper ranges, it snowed. So the weather is cold, and again there is prediction for the snow today, and I'm here. Okay, so we reached at the top area of Benog, which is perched above here. It's so cold. It's damn cold here. I need to zip up as I'm fasting also, so I need to take care. And the weather is getting grey here. It's so dramatic, and you can see that is George Everest, and we have already submitted that. I showed you in the last
video. It's chilling up here just because of snow in the upper mountains, and a lot of flowers we can explore here. Okay. Benog Mountain Wildlife Sanctuary is a home to a wide variety of birds. Birds like white-capped water redstart and magpie. And again, we are so unlucky not to see the bandapooch and chowkhamba from here. It's about to rain, I guess. बिनॉक पीक पे ये दुर्गा माता का एक मंदिर है जिसे कि मसूरी के ही एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है। आई थिंक 1997 में लिखा हुआ है यहाँ पे, और साल में शायद 2-3 बार यहाँ पे भंडारे भी होते हैं, तो उस दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। लोकल्स यहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए। I'm getting into the woods now. Alright guys, so weather is really unpredictable today, and I was hoping to see Bandapooch range, which is lying over there, and also Chowkhamba range, but the weather is getting really freezing here, and just reaching up at the Benog hill top, you can see fantastic views, and I really love it because of the silence here. It's very important when you guys come at the Benog top, so bring your binoculars and hats, because you can see a lot of birds and wild animals living here. It is one of the most attraction of Mussoorie also. Most of the people like Benog, and in the time like when there is no situation like this, people used to come Benog tracks and hiking and doing all this. Personally, I really love this place because the woods comes to give silence, and as the death of the forest is the end of our life. Yet we have disconnected ourselves from the natural world, and beyond such physical goods, the natural world provides less tangible, but just in terms of important gifts, in terms arts and spirituality, is all